Austria's Indian diaspora on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Austria, marking the first visit by an Indian Prime Minister in over 40 years. The last visit was by Indira Gandhi in 1983. During his visit in Vienna, Prime Minister Narendra Modi will meet Austrian President Alexander Van der Bellen and hold talks with Chancellor Nehammer. The leader will address business leaders from both nations and discuss deepening their relationship and tackling geopolitical challenges. PM Modi will also interact with the Indian community in Vienna. Ahead of his visit, he emphasized the shared values of democracy and freedom as the foundation of the Indian-Austria partnership. Now listen in to the Austria's Indian diaspora on Prime Minister Narendra Modi's visit. जी बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सर ने मेरा ये तिलक देखा. मेनी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रॉम गुजरात. तो उन्होंने गुजराती में ही पूछा, इससे भी पूछा, इसकी सरनेम पूछी. इसने कहा विंसी भावसार. तो गुजराती में बात करने लग गए और बोला क्या ना छो, कया गाम ना छो. एंड देन वी आंसर्ड कि अहमदाबाद થી છીએ. एंड ही सेड बहुत सरस, बहुत सरस. सो दैट्स आल्सो अ स्मॉल कन्वर्सेशन इन गुजराती व्हिच ही इंस्टेंटली पिक्ड अप एंड डिड विद अस. प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है. हमने उन्हें उनके थर्ड टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है. एंड his charisma is unbelievable. Hum literally, there are no words now to express. We are very happy that we got a glimpse of him and we were able to meet him. This is all for now. Stay tuned to Jagran English for more news and updates.